All the rules that we learned in the last class, all the rules that we discussed and learned in the last class are also applicable for radians. I hope everyone is by now is aware of the fact that angle दो तरह के हैं, degrees में भी हैं, radians में भी हैं. तो सारा circular measure भी degree और radian में होता है और सारा trigonometry भी degree और radian में हो सकता है. So when theta is in radians, the rules are as follows. Sin 90 minus theta is cos theta. Cos 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is 1 upon tan theta. Are you all with me? Are you all with me? Sin 180 minus theta is sin theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta. Tan 180 minus theta is minus tan theta. Sin pi plus theta. Sin 180 plus theta is minus sin theta. Cos 180 plus theta is minus cos theta. And tan 180 plus theta is positive tan theta. Sin 2 pi minus theta is minus sin theta. Cos 2 pi minus theta is positive cos theta. Tan 2 pi minus theta is minus tan theta. आई होप अब तक सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है. ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है. ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें टैन पॉजिटिव होता है. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है. 0 90 की जगह पाई बाय 2, 180 की जगह पाई, 270 की जगह 3 पाई बाय 2 एंड 360 की जगह 2 पाई. बाहर से किसी को बुला दो मुझे. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, all positive, sin positive, tan positive, cos positive. First quadrant theta, second quadrant pi minus theta, third quadrant pi plus theta, fourth quadrant 2 pi minus theta. Am I clear? These are same rules that we studied in the last class. In the last class we studied them in degree mode. Today we have studied them in radian mode. Steps to find angles in degrees using trigonometry. Steps to find angles in degrees using trigonometry. Steps to find angles in degrees using trigonometry. Step number 1. Check the range.
रेंज चेक करें, डिग्री में दी हुई है या रेडियन में दी हुई है। स्टेप 2, alter the range if necessary. You will only alter the range when it will be necessary to do so. अभी पता चल जाएगा। ऑल्टर क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 3, find the basic angle in degrees. Step 4, apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying. आप सवाल देख के आइडेंटिफाई करें क्या चीज है, साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, और फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है एज पर द रूल्स ऑफ ASTC वी लर्नड इन द लास्ट क्लास। एम आई क्लियर? स्टेप 5, apply the following rules. First quadrant theta, second quadrant 180 minus theta, third quadrant 180 plus theta, fourth quadrant 360 minus theta. Step 6, give the final answer within the basic range in degrees. Sin x is 0.5 and आपको बोल रहा है x lies between 0 and 360 degrees. Am I clear? Step number 1, check the range. क्या ये डिग्री में है? इसका मतलब हमारा कैलकुलेटर का मोड डिग्री में होना चाहिए, हमें सारा काम डिग्री में करना है। स्टेप नंबर 2, ऑल्टर द रेंज इफ नेसेसरी। क्या मुझे रेंज ऑल्टर करनी चाहिए? डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये x है तो रेंज ऑल्टर नहीं होगी। अगर ये 2x है, 3x है, हाफ x है, x प्लस समथिंग है, x माइनस समथिंग है, देन हमें रेंज को ऑल्टर करना पड़ेगा। आर यू ऑल विद मी? So in this particular case, it is x. There is no need to alter the. Find the basic angle. Basic angle बोलते हैं जो भी चीज है उसका साइन इनवर्स ऑफ 0.5 जो भी है, कैलकुलेटर में डालें, आंसर निकालें। This is the basic angle. Are you all with me? Step number 4, apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying. Sine is positive in the first and second quadrant. First quadrant 30, second quadrant 180 minus 30. Are you all with me? ये सॉल्व हो गया। अग्री? एक और करता हूं और क्लियर होगी बात। प्लीज फॉलो करें, फोकस करें, लिखने की जरूरत नहीं है। आई गिव यू टाइम टू कॉपी।
cos x is 0.5. Step number 1, check the range. डिग्री में है, कैलकुलेटर का मोड डिग्री में होना चाहिए. Step number 2, alter the range. Is there a need to alter the range? No. Why? Because this is x. Find the basic angle. Cos inverse 0.5, 60 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which cos is positive. First and fourth. I hope everyone is following me. Apply the following rules. First quadrant theta, second, fourth 360 minus theta. Do you all agree? Do you all realize? Do you all understand? किसी को मसला? Tan x is 1. Check the range. Is there a need to alter the range? No. Find the basic angle. Tan inverse of 1 कैलकुलेटर में डालेंगे 45 डिग्री आ जाएगा. Apply ASTC and check the quadrants in which answers are lying. Tan is positive in the first and the third quadrant. 45, 180 plus 45. Are you all with me? Need everyone's attention here. Sin x is under root 3 upon 2. Cos square x is half. I need everyone 100% focus here. कुछ बहुत important बात बताने लगा हूं मैं. Sin x is under root 3 upon 2. The sign, S-I-G-N, sign before under root 3 upon 2 is not given. When the sign is not given, it is considered to be positive. Tan x minus under root 3 upon 3. The sign before under root is minus. Cos square x is cos x, the whole thing under root 1 upon 2. If I wish to remove square, I put square root on both sides. Agreed? जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर रूट हम खुद लगाते हैं, जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर रूट हम खुद लगाते हैं, therefore at that point in time we write plus and minus. क्योंकि जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें स्क्वायर रूट लगता है तो उसमें प्लस माइनस आता है. अग्री? स्क्वायर रूट जब भी होता है इक्वेशन में प्लस माइनस आना चाहिए. लेकिन अगर सवाल खुद स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो तो द साइन बिफोर द रूट will be considered the sign applicable. For example, in the first situation, there is a positive sign before the root. Hence, positive is applicable. In the last situation, negative sign is before the root. So, negative sign is applicable. In the second situation, there is no sign because there is no root. I am putting the root myself to cancel the square. When I introduce the root myself,
it is mandatory to write plus and minus. I repeat, अगर सवाल में स्क्वायर रूट से पहले कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट से पहले नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, और अगर स्क्वायर रूट हम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट विल बी प्लस माइनस. इज दैट क्लियर? प्लीज देखते रहिएगा. चेक द रेंज. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? ये x है, hence there is no need to alter the range. Find the basic angle. Sine inverse of under root 3 upon 2, 60 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which sine is positive. 60, 180 minus 60, 60 and 120 is the answer. Am I clear? In the second situation, I had to introduce square root myself to cancel the square. Since I introduced square root myself, it has to be plus minus. Check the range. Is there a need to alter the range? No. Find the basic angle. Basic angle निकालते वक्त साइन को इग्नोर, SIGN वाले साइन को इग्नोर कर देते, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. When finding the basic angle, we ignore the sign because the sign only identifies in which quadrant the answers will lie. मैं लिखवा दूंगा ये बात. When finding the basic angle, we ignore the sign, SIGN wala sign, because the sign only indicates in which quadrants the answer will lie. Am I clear? Step number 1, check the range. Step number 2, there is no need to alter the range. Find the basic angle. And basic angle is 45 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which cos is positive as well as negative. प्लस माइनस का मतलब है हमें वो क्वाड्रेंट्स भी चाहिए जिसमें cos पॉजिटिव है और हमें वो क्वाड्रेंट्स भी चाहिए जिसमें cos नेगेटिव. Am I clear? (45), 180 minus 45, 180 plus 45, 360 minus 45, 45, 135, 225, 315. Am I clear? Step number 1, check the range. Is there a need to alter the range? No. Find the basic angle. Basic angle निकालते वक्त साइन को इग्नोर करते हैं. Agree? Apply ASTC and check the quadrants in which tan is negative. Because the sign before the root is negative, because the sign before the root is negative, we will take that sign. Tan is negative in the second and the fourth quadrant. Second quadrant 180 minus theta. Fourth quadrant 360 minus theta.
Am I clear, everyone? Ladies, gentlemen, boys, girls, am I clear? जी बोलिए. सॉरी, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एंगल चाहिए क्या? तो जो क्वाड्रेंट में चाहिए वो वाला लोगे ना बेटा. तो इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है, तो मेरा काम सिर्फ सेकंड और फोर्थ का है. कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए सिर्फ उसी की वैल्यू लिखी जाएगी. आर यू ऑल विद मी? बस. Sin 2x is root 2 upon 2. Step number 1. Check the range. Is there a need to alter the range? Yes, because it is 2x. 0 multiplied by 2 is 0. 360 multiplied by 2 is 720. Are you all with me? Step number 3. Find the basic angle. अब once again अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट से पहले कोई साइन नहीं है, तो मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा. Am I clear? Apply ASTC and check the quadrants in which sign is positive. First and second. First is 45. Second is 180 minus 45, that is 135. अब प्लीज ध्यान रखिएगा, जब दो साइकिल्स होती हैं तो इसका मतलब होता है एक साइकिल followed by दूसरी cycle. So when there are two cycles, whatever answers you have achieved, you add 360 to them to add the results of the second cycle. तो आपके पास ये जो आंसर्स आए हैं, आप इसमें 360 ऐड करेंगे. 45 प्लस 360, 135 प्लस 360, because of the second cycle. Whenever you alter the range and you realize that the cycles are increasing, whatever answers you have obtained, in whichever quadrant you have obtained, you will add 360 to it. So the results will be 2x is 45, 135, 405, 495. ये 2x की वैल्यूज हैं. Give the final answer in the basic range. 22.5. अगर ये डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होती तो याद रखिएगा, एंगल्स इन डिग्रीज आर ऑलवेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. 1 डेसिमल प्लेस पे ही आंसर देंगे हमेशा डिग्रीज का. Am I clear? Step number 1, check the range. Step number 2, alter the range. Find the basic angle. Apply ASTC. Identify the quadrants in which answers will lie. Apply the following rules. And since there are two cycles, हर आंसर में 360 ऐड करो. The answers you obtained are of 2x. x का करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर विद इन द बेसिक रेंज आएगा. Am I clear? ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, कभी गलती नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री. एक और करता हूं एग्जांपल. cos 2x is minus 0.25. Cos 2x is minus 0.25. Check the range. Is there a need to alter the range? Find the basic angle. Cos inverse 0.25. बेसिक एंगल निकालते वक्त साइन को इग्नोर करेंगे. Am I clear? अभी तो बेसिक एंगल निकाल रहा हूं. अच्छा, cos inverse 0.25.
75.5 degrees, correct to 1 decimal place. Apply ASTC and check the quadrants in which cos is negative, second and third. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर होता है? 180 माइनस 75.5, 104.5. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आंसर होता है? 180 प्लस 75.5, 255.5. Since there are 2 cycles, मेरे पास जो भी आंसर्स आए हैं उनमें मैं 360 ऐड करूंगा. वन 104.5 प्लस 360, 464.5 and 255.35 plus 360, 615.5. ये 2x के आंसर्स हैं. x के लिए सारे आंसर्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे. 104.5 डिवाइड बाय 2, 52.3, 127.8, 232.3, 307.8. Give the final answer within the basic range. Are you all with me? अच्छे समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 3. अब स्क्वायर भी है, 2x भी है, तो पहला काम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूंगा? √3. चूंकि अंडर रूट मैंने लगाया है प्लस माइनस, चेक द रेंज. इज देयर अ नीड टू ऑल्टर द रेंज? फाइंड द बेसिक एंगल. Am I clear? Apply ASTC and check the quadrants in which tan is positive as well as negative. All 4 quadrants. So 2x is 60, 120, 240, 300. और जितने आंसर्स आए उन सब में 360 भी ऐड होगा. Why? Because we have 2 cycles. So 60 plus 360, 420. 120 plus 360, 480. 240 plus 360, 600. 300 plus 360, x is 30, 60, 120, 150, 210, 240, 300, 330. Give the final answer within the basic range. Am I clear, ladies, gentlemen, boys, girls? क्या कह रहा है? 360 इसलिए प्लस करते हैं जब 2 साइकिल्स होती हैं. 2 साइकिल्स का मतलब होता है 2 राउंड. पहला राउंड 360 तक था, हमने आंसर्स निकाल लिए. दूसरा राउंड 360 से ऊपर है, तो जो जो आंसर्स निकाले उनमें 360 ऐड करते चले जाएंगे. कब तक? जब तक वो रेंज में है. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जी हम की जिंदगी.